Dimpy, as you belong to the commerce background, can you please elaborate how your background in the commerce optional can help you in the administration? The commerce is a subject which is very diverse in itself. It does not just include accounting and finance, but also its management. And as as a person belonging to this background, I think it would help me in administration where I will be better able to manage human resources, the finances of the government to make the optimum utilization of it. And sir, apart from that, it also helps us to lead in a way which leads to the better goal optimization and fulfillment. And I think, sir, in all these aspects, commerce as a subject can help me in administration. Fine. Can you please tell me the 3 golden rules of accounting? I'm sorry, sir, if I can clarify if you're asking about the principles of accounting. Yeah, 3 golden rules of accounting. Debit what comes in. Debit what comes in, credit what goes out is the first rule. Second is every transaction in accounting has a at least dual aspect, dual impact. So these 2 I can recall as at the moment. Fine. Government of India is following cash-based accounting in most of the departments. Now it is planning to switch over to accrual-based accounting. So what is the purpose behind it, and what is the current status of the accrual-based system of accounting? Sir, accrual basis of accounting was recommended by the 12th Finance Commission of government, and the government is implementing it in an incremental manner, step by step. The current status of accrual basis of accounting is that it has not been fully implemented into the system. And the purpose of implementation is that it represents the correct financial position of the accounts with regards to the receipts and payments of the government, and not just the cash basis. Okay, can you please elaborate a bit, like how it presents the better view? Example, there are 2 bases of the accounting. First is cash basis and another is accrual basis. Under cash basis, we only record when a payment is received or is incurred, irrespective of the year in which it has become due. Or whereas in accrual basis of accounting, we record the transactions when they are made due. For example, if we take a transaction, let's say certain amount of expenditure was made to be incurred in financial year 2023 under the budget promises, but it was incurred in financial year 2024. So under accrual basis, it will be recorded in financial year 2023 only, whereas under cash basis, it is supposed to be recorded in financial year 2024. Fine. So government has already been following this model for a long time. Now, what is the purpose of implementing this system? Can you specify the specific reasons why government is implementing? What will be the visible benefits? So first, most important benefit I can think of at the moment is all the private enterprises follow accrual basis. And while keeping the government accounts at par with the private accounts, it will be easier to compare and And the government is also going towards a strategic disinvestment, which will help it in attracting more private investment. Fine. Can you please tell me the current disinvestment strategy of the government of India? The government currently is focusing more on private involvement, and it has reserved 4 key sectors under itself. And apart from these 4 sectors, which are atomic energy,
transport, telecommunication, banking, finance, other financial services, and energy. Apart from these four sectors, the government is focusing on disinvestment, um, and they call it strategic disinvestment because we are targeting again sector-wise and focusing more on efficiency now. Okay, fine. Now coming to the taxation, can you please tell me the 5 major changes introduced in the new income tax bill? So the changes which I am able to recall at the moment is first that the previous year and assessment year terms have been dissolved, and now the tax year will be used. Tax year and financial year will be used. Another is cryptocurrency and other virtual digital assets have been included in the definition under capital assets. Third, sir, there have been certain redundant sections in the previous financial act. For example, there was one section under capital gains, section 54E, I believe. These redundant sections have been removed now. Fourth is related to the terminology to make it more simpler for understanding. For example, notwithstanding, such words have been replaced with irrespective of. And so fifth, more tabular formats have been used to make the understanding and reading easier for laymen. Okay, fine. As you are aware, you might be aware that the tax department is one of the biggest litigator. So do you think coming of this bill will reduce this problem? So certainly, this bill has the potential to reduce the litigations, because most of the litigations were coming because of the difficulty in interpretation of the act. And now the bill has presented the content in a more simpler format. Thus, it will reduce this interpretation difficulties and complexities, and will further help in reduction of litigations. Okay, fine. Can you compare the new income tax bill with the corresponding income tax related legislation in the USA? Have you ever compared during your training or any time that how the developed countries are managing their direct taxes and how we are managing? What are the major principal difference between the two? I'm sorry, sir, I'm unaware about that. Okay. What is your view on the recent rebate being provided to the in the income tax that was given in the recent budget, where up to 12 lakh there is no tax payable? Definitely, it is going to increase the consumption. Everything is there, but at the same time, don't you think it is just a political gimmick? In the long term, it is not going to help so much because it is not incentivizing any investment. It is not incentivizing any saving habit. So this was actually the concern, that by increasing the exemption limit, how it would increase the consumption pattern, whether the people would save more or would they invest or consume more. But sir, considering the current scenario where consumption occupies around 58% of the GDP, providing such a relief to the middle class of the country, it will help them in increasing their disposable income, and they also have a certain slightly higher propensity to consume than the richer section, and that will help in increasing the consumption in the country. And by increasing the consumption, investment will follow it by the private sector. So, sir, I think it will help in the overall growth of the country.
Okay, fine. Now coming to the financial markets, what are the reasons that in India corporate bond markets have not developed so far? I'm sorry, sir, I lack information to answer this. Okay, fine. Um, do you know what are the reasons of recent downfall in the capital markets? Yes, sir. So there are certain reasons. First is the global uncertainty with respect to the USA tariffs announcement. Investors are uncertain as to which side the economy would turn in, so they now are preferring safer investment opportunities. And sir, the FPI selling in India is further leading to the downfall in the stock market. Okay, fine. And Mhm. so there was one more reason with regards to US Federal Reserve, that earlier had announced that they would cut rates, but now in their recent announcements, they are not cutting rates, which again is leading to more investment pulling out of India and investment in USA. Okay, fine. So you are already working in the um you are already in the revenue service, and recently there was a report that people who are in the all India services, they are under high stress, and recently we have seen many incidents where too much of stress has caused certain deaths also. So how do you see the constant stress which the civil servants have to face on the ground? How will you manage the stress, and this is going to be very difficult. Um, Sir, certainly stress is there, but it is there in every field, every work we do, and it's again about the management of it. And so, personally, to manage stress, I think my hobbies and my interest will help me in relieving it. Additionally, my socialization, my interaction with my family and with my friends, sharing my stress with them, will further help me to reduce it. And so recently, I was listening to one of the interviews of the director of Karm Yogi Capacity Building Commission, and he sir also mentioned that how stress management is one of the most demanding and most famous courses being provided on the iGot platform. And sir, I think by utilizing such platforms and such courses, I can manage my stress. Okay, fine. If suppose you are made the finance minister of India, what will be the top three priorities which you will take care of? So my first priority would be to increase the government revenue um, by stricter compliance and especially in direct taxation. My second priority, sir, would be to rationalize the subsidies. And sir, my third priority would be to streamline the capital expenditure the government is incurring. Okay. Uh, do you think in the income tax department the people from the specialized background should be hired? Like people from the finance background, people from the commerce background? So the background certainly helps us uh, in uh, in administering the work which we are supposed to do. Um, Sir, however, I also believe the income tax department is a very diverse department in itself. It is not just related to tax collection. It is also related to investigation cases, search and seizures, international taxation. And sir, the specific backgrounds does not provide all these details and understanding to a person. And these are learnt on ground and while training, which can be learned by a person belonging to any background. So, sir, I think
one should not be restricted to specific background. Then what is your opinion on the lateral entry? Sir, lateral entry, as it provides the specialization at some points. However, lateral entry is also not restricted to one particular background. It also involves private industries or individuals from particular fields. Um, but at the same time, we also have people from generalized domains. Thus, it has a mix of people. It is not again restricted to one particular field. Fine. Which which theory of motivation is your favorite theory? I'm sorry, sir. I'm currently not able to recall the theories and be able to comment on one favorite theory. Okay. Who is your favorite leader? Sir, currently I can recall APJ Abdul Kalam, sir, as the favorite leader. Okay. Can you compare the personality of Shri Jawaharlal Nehru, APJ Abdul Kalam, and Shri Narendra Modi in terms of in terms of leadership traits? Sir, one trait I can compare them with is how they communicate with their subordinates, with their followers. For example, when it comes to APJ Abdul Kalam, sir, um, he he was leading by examples. Whatever he was telling the followers, he was competent in that field first. And sir, with respect to our honorable Prime Minister Narendra Modi, sir, he communicates with all his subordinates and the cabinet secretaries, other ministers in the cabinet. With He communicates with them directly. There is no middleman involved in the communication, and thus he maintains the original intent of the communication intact. And sir, when it comes to our former Prime Minister Jawaharlal Nehru, he, sir, I think I'm not very sure because I've not read about him much. But sir, I think there was communication from top to down, and he was more like um, I'm sorry, sir. It's just that Okay, I okay. can No recall issues. more. Understood. Fine. No problem. Can you please tell me some of the applications of scientific management theory in the current times? I'm sorry, sir. I lack accurate information to Fine. comment on it. In the cost accounting, we have marginal costing and absorption costing. What is the one point of difference between the two? Sir, absorption costing involves the entire cost of the products, whereas marginal costing involves only the difference when we compare um, one year to another. Okay, fine. In the financial management, there are various capital structure theories. One of the theory is packing order theory. Are you aware about this theory? I'm sorry, sir. I'm not able to recall it. Okay. Are you aware about the signaling theory? I'm sorry, sir. I'm not able to recall it either. Okay. What are the major differences between NPV and IRR? Um, I'm sorry, sir. I'm not able to recall it. Okay. Recently, a lot of financial scams and the corporate frauds have been in news. How do you see the role of auditors in these scams?
Sir, the role of an auditor is to ascertain whether the statements provide true and fair view of the entity of the business. And sir, in light of these scams, again, as observed by our courts, the auditor has to act as a um, watchdog, not as a bloodhound, and thus provides the space to the management to do their work and to make the financial statements, and only to ascertain whether those financial statements provide the true and fair view based on the information being available to him or her. Okay. Last year, capital gains tax related many amendments were introduced. Uh, how do you see this change? I mean, if we compare this with the other countries, in India we have high inflation. So, don't you think we should continue the practice of indexation in India? Um, yes, sir. There were actually debates after the removal of indexation, and now the option has been provided whether with indexation we can provide capital gains tax at the rate 20% or without indexation at the rate of 12.5%. But yes, sir, exactly. Considering inflation in India, which is around 4.8% or 4.4%, indexation should not be completely eliminated, and it can be provided on voluntary basis. Fine. How we can harness the power of artificial intelligence to improve the tax revenues? Sir, artificial intelligence can help in ease of compliance. For example, we can have virtual chatbots, which would help people to assist them in filing their tax returns. And sir, another could be to link all the financial institutions, for example, banks and other non-bank financial institutions, to provide all the information related to a person's revenue and finances at one particular point of place and time. And sir, apart from that, um, like we have neobanks, we can also have assistance centers in rural areas or backward areas, which would be assisted by AI to again improve the tax filing. Okay, fine. Normally, the citizens, they have a very poor perception about the government departments. So, as head of the department in some administrative role, what steps will you take to improve the perception in the minds of people? So to improve the perception of the people, I believe accountability and transparency play a great role in it. And to provide that, I would ensure that in my department, the citizen charter is followed in letter and spirit. It is displayed on a very visible platform and is followed. Another, sir, any grievance which would be there, I would ensure that there is a step-by-step resolving structure in it. And I, and sir, if possible, social audits can be performed regarding the functioning of the departmental schemes or programs, whichever are being held, to again improve the perception of the people. Fine, that's right. You whatever you have mentioned, that is already in the agenda of the government. These systems are already there in place. But what, as an officer, what steps you will introduce so that you restore the confidence of beneficiaries and the stakeholders? All these things are already there. How will you give the personal touch to the department or to the beneficiaries? So one step which I am currently able to recall could be the then proactive administration. So there will be many schemes or programs running in the department, and by providing them proactively to the people, door-to-door service, as we say, can improve the perception then. The
government faces crunch of manpower, and there are a lot of urgent tasks to be done. So it is easier said than done that we'll make some structural change. A lot of people are trying. Do you have some role models which you already know and have done this kind of work? Given the constraints we have, you will have in the job. I'm sorry, sir, I'm not able to recall currently. Okay, fine. What should be the response of trade unions to the problem of AI? So the trade unions are apprehensive of the fact that AI would replace the manpower and would lead to more and more layoffs in the departments. Yes, in India, definitely AI is going to be there, and on the other hand, we have a lot of unemployment already, and then AI will replace so many jobs. What should be the approach of India to deal with the threat posed by the AI towards the labor? Sir, recently in the Global AI Summit, our Honorable Prime Minister has also mentioned that the approach of India is should be on skilling the workforce. As we know, AI is not here to substitute the workforce, rather to complement it. And the need of the hour is to skill the workforce as per the demands. Okay, fine, fine. Completed from my side. ठीक है जी. So now I will stop the recording, or you not need the Okay. recording of feedback? I think you will need it, na? Because Yes, sir. I'll be sharing some factual information. Fine. So, how was your experience? Questions and all. I understand factual part. Not good. Factual part I understand, but मतलब, because it was a very very pinpointed area, so I was not going out of the subject actually. जानबूझ के मैंने factual question जानबूझ के पूछे थे कि ठीक है, इस बहाने से ना मैं आपको बता दूंगा information wise, है ना, so that कि अगर यहाँ से कोई question बनता है तो at least you can easily give the answer. So coming to the first one, how the commerce is going to help you in the administration. आपका आंसर, it was appropriate. I don't suggest any major changes in this. Second, cash based versus accrual based accounting. So यहाँ पर भी आपका रिस्पॉन्स ठीक है, एग्जाम्पल से भी पूरा समझाया. आपने जो पर्पस बताया था दैट वाज आल्सो फाइन. थोड़ा सा यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प द गवर्नमेंट इज इट विल हेल्प द गवर्नमेंट डू द पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर. पीपीपी को बूस्ट मिलेगा इससे. मतलब आपका पॉइंट वो ठीक था कि प्राइवेट सेक्टर से कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड कर सकते हैं पावर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में. And also it will help the government raise the funds from the abroad and from the India based on the financial credit worthiness rather than just the sovereign credit worthiness. तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने कमर्शियल अकाउंटिंग के बेसिस पर अपने क्रेडिबिलिटी को शो कर सकते हैं बॉन्ड्स वगैरह इशू करने में. तो प्रोबेबली इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द गवर्नमेंट इन द फ्यूचर. तो ये इसके कुछ विजिबल पॉइंट्स हैं. नाउ coming to USA versus India's income tax. तो इनफैक्ट मुझे भी इसका ज़्यादा नहीं पता है. आई वॉज थिंकिंग कि प्रोबेबली यू माइट बी नोइंग. एक्चुअली 20 years ago आई वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट ऑफ IRS. IRS होता है वहाँ पे, बोलते हैं ना IRS लेजिस्लेशन है वहाँ पे ना. IRS है, हाँ. बट वहाँ पर बहुत सिंप्लिसिटी है, मतलब ये है वहाँ पर ना, बहुत सिंप्लिसिटी है. अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा. मतलब ठीक है, इतना कोई मेजर पॉइंट नहीं है. अगर आप किसी सीनियर से पूछ सकते They हैं. have high taxation. Only that point I knew that they have high अच्छा, taxation there. their tax rate of taxation is more than India. I हाँ think so, हाँ sir. हाँ. In one आप of the interviews they asked. अच्छा अच्छा, तो बेसिकली थोड़ा सा ना आप इसको फॉर्मल इनफॉर्मल के एंगल से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ना वहाँ पे चीजें बहुत स्ट्रीमलाइंड है. फॉर्मल सेक्टर है, सब चीजें रिकॉर्डेड में हैं, तो उनके लिए इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है. मतलब ना जैसे इंडिया में
एक तो अवेयरनेस की कमी है लोगों में, और एक कल्चर नहीं है टैक्स पे करने की, इनफॉर्मल सेक्टर है, तो उसकी वजह से डिफिकल्टीज आती हैं टैक्स डिपार्टमेंट को भी, और लोगों को भी लगता है कि शायद टैक्स टेररिज्म उनके ऊपर हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब इंडिया में अभी भी देखे हैं तो बहुत लिबरल है इनकम टैक्स जो है, मोस्टली लोगों पे तो लगता ही नहीं है, जिन पे लगता भी है तो वहां पर कहाँ पे कुछ हो पाता है, मतलब कितने ही लोगों को स्क्रूटनी कर सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा उस एंगल से आप टच कर सकते हैं ना, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, और इंडिया में जो टैक्स पेयर्स हैं, कितने लोग टैक्स पेयर्स होंगे, वहां पे कितने टैक्स पेयर्स हैं, कुछ वो से डायमेंशन आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट इन इंडिया। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट क्यों डेवलप नहीं हो पाई है? बिकॉज ये मैं इकोनॉमिक सर्वे से बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट था कि 99% ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दे आर प्राइवेटली प्लेस्ड, यानी कि वो पब्लिक में इशू नहीं होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इवन पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड्स मोस्टली, बिकॉज पीपल दे इन्वेस्ट इन द फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स। तो एफडी जो है वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है, बिकॉज एवरीवन इज नियर बाय द बैंक ब्रांच, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, और ऐसा कोई उनके पास प्लेटफॉर्म भी नहीं होता है, तो ट्रेडिशनली ये रहा है दैट दे प्रीफर टू इन्वेस्ट इन द फिक्स डिपॉजिट्स। सो investors are also not very much habitual of using the bonds as a tool of investment. But now it is an opportunity for India to actually boost, because now we have ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब हर किसी के खाते यूपीआई से लिंक है, हर किसी का डीमैट ऑनलाइन खुल सकता है, तो हम लोग सेकेंडरी मार्केट को पॉपुलराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट को कुछ सेबी को कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि 99% ऑफ द issues are privately placed. Second issue is people are not investing in the bonds. Third is that basically there is comparatively like जो मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं वो उतना ज्यादा इजी नहीं है, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल, है ना। तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेम्स, तो वी कैन सिंप्लीफाई द थिंग्स। जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ने बहुत पॉपुलराइज कर दिया बॉन्ड्स को, लोगों ने जाकर के पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहां पर सोवरिन बैकिंग भी थी, और बहुत सिंपल था कि भाई गोल्ड के प्राइस पे आपको खरीदना है, गोल्ड के प्राइस पे आपको मिलेगा वापस। तो कुछ इस तरह के हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी कुछ ऐसा बेस बना सकते हैं कि लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाए, लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाए। तो ये एक पॉइंट हो गया। एंड लास्ट इज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पीपल हु आर इशूइंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। मतलब जिन लोगों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस टॉप वाली है, और बाकी जो लोग हैं जिनकी टॉप वाली नहीं है, वो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस पुअर होने की वजह से उनको बॉन्ड इशू करने में डिफिकल्टी फेस होती है। मतलब कि कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग पे ही आपका मोस्टली बॉन्ड इशू डिपेंड करता है, कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत स्ट्रांग है तो बॉन्ड आप इजीली इशू कर सकते हो, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये भी एक चैलेंज है कि हमें क्रेडिट रेटिंग को सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया हम यूज नहीं कर सकते, हमें और भी चीजें देखनी चाहिए। मतलब तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में है। रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर एक काफी डिटेल में दिया हुआ था, इसलिए मैंने पूछा क्वेश्चन। बाकी आपका आईआरएस फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड, वो आंसर ठीक था। एफएम की 3 प्रायोरिटीज, वो भी ठीक था। एंड मोटिवेशन थ्योरीज, तो मोटिवेशन थ्योरीज में आप एक थ्योरी मेंशन कर सकती हो, या तो कुछ याद नहीं आया तो मैस्लो लगा दो, मैस्लो तो सदाबहार है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट, है ना। और अदरवाइज आप, अगर हम वर्क के हिसाब से देखें ना कि एज ए लीडर आप कौन सी थ्योरी को ज्यादा यूज कर सकते हो, तो आपकी विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल है, एंड इक्विटी थ्योरी भी है इसमें। मतलब तो वो आपकी कहीं ना कहीं लीडरशिप स्कूल को भी शो करता है। विक्टर रूम्स आपको पता होगा, एक्सपेक्टेंसी, वालेंस एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटल, वीईआई होता है। तो वालेंस क्या होता है कि पर्सनल प्रेफरेंस फॉर द गोल, वालेंस हो गया पर्सनल प्रेफरेंस फॉर द गोल, है ना। सेकंड इज एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी मतलब कि पर्सन को ये हो कि आई एम कैपेबल इनफ टू डू दिस वर्क, तो मेरा जो एफर्ट है वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होगा।
ये आपकी एक्सपेक्टेंसी हो गई। थर्ड है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी में दिस परफॉर्मेंस विल लीड मी टू डिजायर्ड रिवार्ड। इक्विवेलेंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, ये एक बहुत सिंपल थ्योरी है। मतलब ये बहुत ही अगर आप मतलब किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं कि भाई मेरा कोई जूनियर है, उसको मैं मोटिवेट कैसे करूं। पहले मैं उसकी पर्सनल नीड को आइडेंटिफाई करूं कि उसकी पर्सनल नीड इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिकली हम पूरा कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक में उसकी नीड हो सकती है कंट्रीब्यूशन की, सोशल रिस्पेक्ट की। तो उसको हम आइडेंटिफाई करें, फिर उसको हम ऐसा काम दें कि उसकी कैपेबिलिटी से मैच होता हो, कि अगर वो उस काम को करे जो जिस काम में उसको एक्सपीरियंस है या जिस काम में उसका इंटरेस्ट है, तो वहां से वो परफॉर्म कर पाएगा। और जब परफॉर्म करेगा तो हम उसको फिर रिवार्ड करें। रिवार्ड में नॉट नेसेसरली मॉनेटरी रिवार्ड, कैन बी नॉन मॉनेटरी रिवार्ड ऑल्सो। तो ये थ्योरी एक ऐसी स्टैंडर्ड थ्योरी है जो कि आप यूज कर सकते हो। और इसी के साथ में आप क्लब कर सकते हो इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी की जो इनपुट और आउटपुट है उसका रेशियो वो इक्विटेबल होना चाहिए अक्रॉस द पीपल। तो ये थ्योरी जो आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो मैस्लो थ्योरी इज द मोस्ट पॉपुलर। सिंपल भी है और वाइडली पॉपुलर भी है, मतलब ये और प्रैक्टिकल भी है। और अगर प्रोसेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो विक्टर रोम्स थ्योरी होगी आपकी ना। और अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका लीडरशिप वाला। तो लीडरशिप वाले में जैसे आपने जो अम, इसमें कुछ वर्ड आप यूज कर सकते हो, जैसे कैरिज्मेटिक लीडर। एक अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी देवर कैरिज्मेटिक लीडर मोस्टली। कलाम जी जो थे वो टेक्नोक्रेट थे। तो इनिशियली ही वाज ट्रांजिशनल, लेटर ही बिकम कैरिज्मेटिक लीडर। और एक जो पॉइंट आपने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही डायरेक्टली टॉक्स टू द सेक्रेटरीज, तो वहां पर एक काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रलाइजेशन है ये तो। मतलब कि डोंट यू थिंक, मैं पूछने वाला था बट मैं भूल गया पूछना कि डोंट यू थिंक इट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर दैट ही इज bypassing the ministers and directly talking to the cabinet secretaries and others, मतलब other secretaries. So how do you respond to this? So the work is being done in hierarchy only. All the orders and the feedback is being provided in hierarchical order only. But however, the direct communication let the secretaries and other people to to talk about any grievance they have or any issue they are facing, which is not being resolved yet. So that provides that window of scope. Okay, understood. ठीक है, फाइन। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो आज के समय में जैसे जितने भी आपकी एग्रीगेटर एप्स हैं, एग्रीगेटर एप्स, तो बेसिकली देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन प्रिंसिपल है वो है टाइम एंड मोशन स्टडीज। टाइम एंड मोशन स्टडीज यानी कि किस काम में कितना समय लगेगा, हम उसको कैलकुलेट करते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो जैसे आजकल ये मॉडल चल रहा है 10 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं वो लोग घर में, तो वो टाइम एंड मोशन स्टडीज का यूज कर सकते हैं, करते हैं बेसिकली। उसी तरह से आप उबर में टैक्सी बुक कराते हो तो वहां पर भी टाइम एंड मोशन स्टडीज का यूज होता है कि आपके यहाँ से कितना समय लगेगा, कौन सी कैब आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी मूवमेंट बेस्ट रहेगा। तो सारी जो इस तरह की एग्रीगेटर एप्स हैं वो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। इसके अलावा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, ये भी उन्होंने बताया था। तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन भी साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ड है। मतलब मैं जस्ट आपको बेसिकली क्या है ना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक बार आपका थॉट प्रोसेस चल जाता है ना उस तरह से, तो अगर कोई वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन उठा के पूछ ले, मतलब उनके मन में आ जाए, तो एटलीस्ट आपको एक डायमेंशन मिल जाता है कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं इस चीज को। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का जो डिफरेंस है दैट इज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बेसिकली जो मैं एक सिंगल पॉइंट उस समय बोल रहा था, तो मार्जिनल में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड नहीं होता है प्रोडक्ट कॉस्ट में, और एब्जॉर्प्शन में ऐड होता है। सिर्फ एक पॉइंट है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बाकी सब मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट में कॉमन है बाकी। और नेक्स्ट आपका है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में क्या होता है ना कि कैपिटल रेस करने के लिए जो एक सजेस्टेड ऑर्डर है वो है कि फर्स्ट आपको इंटरनल इक्विटी यूज करनी होगी।
जो अपने खुद के रिजर्व्स हैं। तो जो भी आपकी अच्छी कंपनी होती है, मतलब जो प्रोस्पेरस कंपनी होती है, जैसे टाटास हो गए, इन्फोसिस हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनके पास रिजर्व्स बहुत हैं, पैसा बहुत है अपना, तो ये लोग पहले अपने इंटरनल रिजर्व्स को यूज करते हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाती है, क्योंकि इनको एक्सटर्नल रेस करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ रेसिंग भी आएगा, और दूसरा एक सिग्नलिंग इंपैक्ट भी होता है कि अगर आप फंड को, सेल्फ फंड को यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर गुड इनफ, मींस आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, मार्केट में डिपेंडेंट नहीं हो। तो इसी को हम कहते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनके हर एक्शन का कुछ ना कुछ मार्केट में मैसेज जाता है। तो अगर वो अपने इंटरनल रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं तो उससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, अदरवाइज एक मैसेज अलग टाइप का जाता है, सपोज वो लोन रेस करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये सिग्नलिंग थ्योरी होगी। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स भी आपका ठीक था, ऑडिटर वाला भी ठीक था, एआई एंड इनकम टैक्स फाइन। जो परसेप्शन वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें आप दो तरह के आंसर दे सकते हैं, दो तरह से, कि एक तो सिस्टमेटिक चेंज, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं जैसे सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, तो मैं उनको देखूंगी कि भाई वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक मैकेनिकल वे में काम हो रहा है या किसी दूसरे तरीके से। और दूसरा फिर आप परसेप्शन इंप्रूव करने के लिए डायरेक्ट मीटिंग्स, मतलब वीक में आप एक दिन रख सकते हैं कि आई विल बी अवेलेबल फॉर 2 आवर्स, मतलब मंडेज विद मंडेज विद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसा करके ना, मतलब एक दिन मैं डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स से, एनीवन कैन कम एंड मीट मी, और दूसरे दिन एनी बेनिफिशियरी एंड स्टेक होल्डर दे कैन डायरेक्टली कम एंड मीट मी। तो कहीं ना कहीं आप उससे ना एक ऐसा मैसेज दोगे कि यू यू आर इन टच विद द पीपल एंड यू नो द ग्राउंड रियलिटी। तो इससे परसेप्शन चेंज होगा कि एटलीस्ट देयर इज समवन टू लिसन। तो जो जैसे आप मोदी जी के लिए कह रहे थे, सेम चीज आप अपने मैसेज, अपने आंसर के थ्रू भी मैसेज छोड़ सकते हो कि आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम। मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल टच देना है आपको। जो चीजें स्ट्रक्चरल है वो तो पता ही है सबको, ये चीजें हैं, तो उनको तो हमें सही से काम कराना है, और कुछ फिर हमें पर्सनली भी उनको एक मतलब टच देना है उसको। अच्छा, लेबर एंड एआई के ऊपर बेसिकली एक तो रीस्किलिंग तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है ही। बाकी इस बार इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट चैप्टर जो है वो इसी चीज को डील करता है कि लेबर जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है, और ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो इंडिया पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब जो है वो नॉन डिसीजन मेकिंग वाली है, उस तरह की जॉब है जो एआई रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर रीस्किलिंग डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, लेकिन साथ में ना वी हैव टू कन्विंस द इंडस्ट्रीज फॉर हैविंग एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड, दैट दे शुड नॉट see the AI just as an opportunity to replace the manpower. Rather, they should see the AI as an opportunity to increase the productivity of their industries without doing the job cuts. तो यहां पर थोड़ा सा सेंसिटिविटी की जरूरत है, सेंसिटिविटी अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। और हम एआई को रीस्किलिंग के अलावा हमें अपने स्कूल कॉलेजेस में भी इनकलकेट करना होगा, हर जगह करिकुलम में इंक्लूड करना होगा, और एक्चुअली एआई को हमें यूज करना होगा टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल विदाउट इंपैक्टिंग द करंट मैन पावर। और इसकी वजह से जो भी ट्रांजिशन में जिनको लॉस होगा, क्योंकि कई लोग तो देखो रिप्लेस हो ही जाएंगे, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो इनकम सपोर्ट करे। मतलब जो लोग एआई की वजह से अपनी जॉब लॉस करेंगे, उसको गवर्नमेंट टेक केयर करे किसी तरीके से, मतलब इनकम सपोर्ट। ये ट्रांजिशन फेज में इनकम सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ में, कॉर्पोरेट्स भी इसको करें। मतलब अगर वो किसी को एआई की वजह से निकाल रहे हैं तो उसकी टेक केयर भी करें वो, मतलब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है अगले 2-3 सालों में। तो यहां पर कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी, एम्पैथी से काम चलेगा। और इसके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, और बिजनेस सेक्टर हो गया। 3 सेक्टर बताए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। तो ये सब चीजें मैं इकोनॉमिक सर्वे से बता रहा हूं आपको मैं। तो 3 सेक्टर उन्होंने बताए हैं, हेल्थ सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर में एआई को यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर में तो कोई रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं उठता किसी भी तरह का। तो यहां पर हम एटीट्यूड बदलें
कॉर्पोरेट्स का कि भाई आप ये मत सोचो कि हमें लोगों को निकालना है, आप ये सोचो कि लोगों को यूज करके हम एआई को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे डबल करें। ये पॉइंट है। तो ये मेरे फीडबैक थी, फैक्चुअल चीजें। रेस्ट ऑल इज फाइन, मतलब ब्रॉडली क्वेश्चन यही कवर होते हैं मोस्टली, सारे डायमेंशन मैंने टच कर ही लिए सारे सब्जेक्टों से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं। आईएएस वर्सेस आईएफआरएस, एएस वर्सेस आईएफआरएस है आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है उसका? हाँ, वो हाँ, है नोट्स में। बस वो थोड़ा देख लीजिएगा। और बताइए, और कुछ इसके अलावा कोई पॉइंट आपके तो माइंड में 3 हो? गोल्डन रूल्स कौन कौन से थे? मैं आपको शेयर कर दूंगा उसको, है ना। आई शेयर द कंप्लीट, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है छोटा सा, तो बेसिक, कई बार मतलब वो बहुत बेसिक चीज टच कर लेते हैं। हम्म। और बताइए। ओवरऑल ठीक था वैसे तो। हाँ, ओवरऑल आपका जो आंसर का अप्रोच है वो सही है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, स्टेबल है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और यू आर टचिंग द कोर पॉइंट, तो बाकी सब चीजें ठीक है। फैक्चुअल का कोई लिमिट नहीं है, और आपने कोई फेक भी नहीं किया कि आपको आता नहीं है फिर भी आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मतलब नो डाउट अबाउट इट। लास्ट टाइम आपके कितने मार्क्स आए थे? 176। 175? 6, हाँ, 176। 176, ठीक है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कॉमर्स से उन्होंने? पहले तो वही था मैम का कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट माय पेंशन अमाउंट। हाँ फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, शी वाज रिटायरिंग दैट डे। अच्छा 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 अच्छा, बस इसको आप प्रिपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन मैं भी पूछने वाला था, फिर मैं पूछ नहीं हम्म। पाया। हम्म। उसका सर अभी तो वैसे मैंने यही सोचा हुआ है कि एक तो म्यूचुअल फंड्स ही है, हाँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स यही हो गया। इंडेक्स फंड्स में, हाँ इंडेक्स फंड्स में। हम्म। एंड इंडेक्स देन फंड्स, आई हैव हाँ। थॉट ऑफ गोल्ड डिपॉजिट्स। हाँ, मतलब उसमें एक इमरजेंसी फंड रखें। इमरजेंसी फंड्स को एफडी में रख सकते हैं, 6 महीने के लिए हम्म। इमरजेंसी फंड रखें एफडी में। उसके अलावा उनको जितना रेगुलर, उनको एक वो चाहिए, अमाउंट चाहिए रेगुलर, तो उसके लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स आते हैं आजकल। तो वो एक लमसम अमाउंट जमा करके और वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉ कर सकते हैं। हम्म। दो चीजें ये हो गई, और अगर उनके पास में और फंड्स हैं, अगर उनको कॉर्पस वगैरह में इंटरेस्ट है, तो फिर वो कुछ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट वाले में तो हमारी इमीडिएट हमने इमरजेंसी फंड रखा, दूसरे वाले में हमने रेगुलर इनकम जनरेट की, और तीसरे वाले में हमने, अगर हमारे पास ज्यादा फंड है तो उसको हम एक कॉर्पस में बिल्ड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए, या फिर अपने लिए भी, क्योंकि आज के समय में एक पॉइंट और भी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग। तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई बार जो रिटायरमेंट वाले फंड्स होते हैं वो भी इंसफिशियंट हो जाते हैं बाद में। मतलब ये एक, मैंने भी एक, मेरे नॉन में एक लेडी हैं, शी रिटायर्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द पीएसयू, एंड आई थिंक 10 years आफ्टर हर रिटायरमेंट शी वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम। मतलब पहले तो उन्होंने ज्यादा खर्चा कर दिया, मैनेज ढंग से नहीं किया, और बाद में देन शी वॉज रनिंग टू हैव, मतलब शी वॉज हैविंग द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा उसको देख सकते हो। हम्म।